So in today's class, we are going to learn some methods and techniques how to write a letter. So I am Srikanta Sahoo from Government High School in Jirma. Letter writing. So what is letter? So in general or in a simple language, we can say a letter is a means of communication, or it is a means to send a message from one person to another person. So in our day-to-day life, we definitely send some messages or communicate with some person by using different types of methods. So letter is also one of the methods or techniques that we use to send our message. So dear students, in the examination point of view, in your summative assessment 2 examination, you have to answer one letter and one application, which carries 5 marks each, and from letter and application you will get 10 marks. Okay. So it is also important to know how to write a correct letter. So dear students, by learning letter writing, we will develop one skill, that is our writing skill. So from that point of view, it is also essential to learn the techniques of letter writing. Let's go to the smartboard and start our discussion. So dear students, at first we should know what is a letter. Okay. So I have told you in a simple language that a written or a printed communication directed to a person or organization. It is a written communication, handwritten he pare, or it may be a printed. Okay. It is a means of communication, I told you, and it is directed to a person or organization. कौन सी व्यक्ति विशेष को पठाई परिबा और कौन सी अनुष्ठान को मध्य पठाई परिबा ऑफिस को मध्य पठाई परिबा मे बी. Okay. So let's try to understand what are the types of letters. Okay. So there are two types of letters. One is formal and the other one is informal letter. Formal and informal letter. So let us try to understand what is formal letter. Letters are two types. One is formal, another is informal. So in formal letter, it is from, or it may be from an individual to an office. Okay. When a person or an individual write a letter to an office, is it formal letter? Or it may be from one office to another office. Just like suppose the block development officer writes a letter to collector, or suppose headmaster write a letter to district education officer. So it is office to office, and individual here, individual to office. When you are writing an application to headmaster, okay, when you are writing an application to block development officer, when you are writing an application to collector, this is individual to office. Okay. So next, from an office to a person. Okay. It may be from an office, suppose
block development officer or district education officer to some certain teachers. It may be from an organization such as bank to or the council to a person, or possibly letters of complaint, letter asking for information. So these are several types of letters, but remember, you have to answer or you have to write only one. फॉर्मल लेटर कैटेगरी रे आमे देखुचे ऑफिशियल लेटर आसी पारे, बिजनेस लेटर आसी पारे, बट आमे कोन लिखिबा व्हाट वी हैव टू राइट, इट इज द फर्स्ट वन. ओके, द फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट वन हियर, फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू ऑफिस. इन योर एग्जामिनेशन परीक्षा रे आसीबो पिला माने इंडिविजुअल ऑफिस को पत्र लिखिया पाई ना लेटर लिखिया पाई आसीबो, एवं जहा को कहा जाए एप्लीकेशन. Okay, remember, when a person writes a letter to an office, when a person writes a letter to an office, it is called application. So you have to write an application in your examination, which carries 5 marks. Okay. So let's come to informal letter. What is informal letter? It is only one category. Informal letter कौन? To people you know. That means when you are writing a letter to your father, when you are writing a letter to your friend, when you are writing a letter to your uncle or relatives, etc., it comes under informal letter. बुझेगला फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. पिला माने परीक्षा रे मन रखिथिबो, गोटे फॉर्मल लेटर आसीबो जोटा 5 मार्क रहिबो, गोटे इनफॉर्मल लेटर आसीबो एवं सेटा मध्ये 5 मार्क तुमको उभय फॉर्मल रु गोटे इनफॉर्मल रु गोटे उभय लिखिबा को पड़िबो. हैला तो राइटिंग ए फॉर्मल लेटर हमको कोन ध्यान देबा को पड़िबो टिके लक्ष्य करो एठी. When you are writing a formal letter, one side of the paper only. Try to write the formal letter in one page, and you have to plan before you write. Planning is necessary. What you are writing, to whom you are writing, what is your demand, or what you are writing for. That is the planning. Okay. So next one, keep it simple. Do not make it complicated. कष्ट व जटिल शब्द व्यवहार करने उचित नुहे. Always try to keep your letter or your application simple. Okay. Next, let's come to the format of application or formal letter. Formal letter बा एप्लिकेशन जोटा आम कहूचे बर्तमान आमर क्लास 10th रो परीक्षा दृष्टिकोण जोटा एप्लिकेशन लिखिबा, दैट एप्लिकेशन कैरीज 5 marks and this is the format of an application. You have to follow this format. तो पिला माने एटी लक्ष्य करिवो एप्लिकेशन रो फॉर्मेट रे हमें फास्ट आगुरु जो हमरो ट्रेडिशनल मेथड थिला, ट्रेडिशनल मेथड में कौन करूले, वी आर राइटिंग द डेट एंड प्लेस. ओके, सो यू हैव टू फास्ट राइट द नेम ऑफ द प्लेस. दिस इज द फास्ट स्टेज. प्रथमे जो जगार में एप्लिकेशन लिखुचे से जगार नाटा प्रथमे लिखिबा. ओके, सो नेक्स्ट इज डेट. A date when we are writing the letter.
So here I have written 4 types of format. तारीख लिखिबार 4 प्रकार फॉर्मेट को लिखिछि. डियर स्टूडेंट्स तुम खाता पत्र बाहर करके नोट करे नियो. दिस इज द लेटेस्ट फॉर्मेट. वर्तमान जो लेटेस्ट फॉर्मेट आसी से लेटेस्ट फॉर्मेट विषय में आलोचना करूची. लेटेस्ट फॉर्मेट रे कोन होची हमरो सब गुडा को जोटा होची एवरीथिंग हमें आनिबा कोठी की हमरो लेफ्ट साइड रे लिखिबा सब गुडा बुझियला. सब जिंस गुडा को हमरो लेफ्ट साइड रे रहइबो. रिमेंबर प्रथम मु कहली द फर्स्ट वन नेम ऑफ द प्लेस. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द डेट व्हेन यू आर राइटिंग द एप्लीकेशन. ये डेट लिखा फॉर्मेट रे टिके भूल कौन हुए पिला माने जदि मो 22 अगस्त जो लिखी पिला माने साधारणतः लिखि दियंती भलिया आवर हैबिट. दिस इज आवर हैबिट. ओके दिस इज आवर हैबिट टू राइट ए डेट. और सही फॉर्मेट रे हमें अवॉइड करिवा. वी डू नॉट राइट लाइक दिस. ओके ऑलवेज राइट द मंथ नेम हियर. मंथ नेम टा हमें बढ़िया लिखा नहीं. वी डू नॉट राइट लाइक दिस. ओके जो बढ़िया फॉर्मेट रे लिखले चलिबो 22 अगस्त 2022 अगस्त 22 और 22 अगस्त 2022 अगस्त 22 जते ए बढ़िया लिखा हो जति लक्ष्य करथिबो 22 जतो बीटा डिजिट जेतु अछि पाखरे पाखरे मिसी जीवार संभावना अछि जति एठी गोटे कमा दे देबा हमें. Otherwise comma is not necessary. एठी जेतु 2022 दीटा जाक एका संगे रही गला सेति पे हमें एठी कमा यूज करबा. ओके हला द फर्स्ट वन नेम ऑफ द प्लेस देन डेट. प्रथम काम सरला हमर. नेक्स्ट वन द नेम ऑफ द अथॉरिटी टू whom we are writing the application. जो अथॉरिटी पाखक आम एप्लिकेशन लिखुचे डेजिग्नेशन टा लिखा हम. वी राइट द डेजिग्नेशन. सपोज वी आर राइटिंग द हेडमास्टर यू कैन राइट हियर द हेडमास्टर. ऑलवेज रिमेंबर द इज नेसेसरी हियर टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर टू द कलेक्टर टू द हेडमास्टर. जो अथॉरिटी पाखक लिखुच तो यूज करवाटा जरूरी. ओके हमर एठी आगुरा में 2 बोली के लिखुतले बट इन मॉडर्न हमर जो आसी गलानी 2 टा दरकार पडुन तमे लिखि पारो बट इट इज नॉट नाउ नॉट नेसेसरी टू राइट 2. ओके बट यू आर राइटिंग इट इज ओके नो प्रॉब्लम. बट हमर वर्तमान जो आसी छि सेतरा हमर 2 टा न लिखले मध्य चलबो. म लिखिबा उचित नय. डायरेक्टली हमें द हेडमास्टर द वीडियो द कलेक्टर हमें लिखि परिबा. देन आसी जिवो हमरो ऑफिस नेम. ओके डेजिग्नेशन लिखिले तापर आसी जिवो कोन ऑफिस नेम. ऑफिस नेम सपोज हेडमास्टर को पाखक लिखुचे टू द हेडमास्टर. ऑफिस नेम हमरो स्कूल रो नाटा एठी आसी बुझियला. तापर ऑफिस एड्रेस स्कूल टा तमरो जो जगह रे अछि ई जगह रो एड्रेस टा दिया. ओके सरी गला इटा ई पोर्शन सरी गला पिला माने प्लेस डेट देन नेम ऑफ द अथॉरिटी ऑफिस नेम देन ऑफिस एड्रेस. देन आसी जिवो हमरो सैल्यूटेशन. व्हाट इज सैल्यूटेशन. व्हाट इज सैल्यूट. सैल्यूट हमें करछे नहीं. तो हियर सैल्यूटेशन इज सर और मैडम. दिस इज द सैल्यूटेशन. ओके सर मैडम. सैल्यूटेशन दबा जो जगह सर लगे तुम जानी सर मैडम डिफरेंशिएट करि परिबो. एवं जो कि हमको जणा नहीं सेठी सिंपली हमें सर लिखिबा. ओके जणा नथले सर लिखिबा. देन एठी गोटे हमर डेविएशन अछि पिला माने देखि परिबो तमे. आगुरु हमें जो सब्जेक्ट लिखुतले सब्जेक्ट सेंटेंस we are writing the subject sentence here after the address. एड्रेस कर देला पर हमें सब्जेक्ट सेंटेंस ता प्लेस करथले.
वर्तमान कौन है न्यू फॉर्मेट अनुसार आफ्टर सैल्यूटेशन सार मैडम लिखि सारला परे आमे सब्जेक्ट को प्लेस करबा देखो ट्रेडिशनल मेथड में जो आगुरु थिला सेटा मध्य आमे लिखुछे चलिबो नो प्रॉब्लम बट ट्राई टू राइट इन न्यू मेथड ओके न्यू मेथड को अडॉप्ट करने को चेष्टा करबा दरकार तो एटी सैल्यूटेशन परे आमे सब्जेक्ट को लिखिबा हमर जोटा परीक्षा रे पडिथबो बा जोटा हमको क्वेश्चन दिया हितबो से अनुसार सब्जेक्ट सेटू काढिबा हम क्वेश्चन रो सब्जेक्ट को काढिबा नेक्स्ट होची हेडमास्टर को जते बडा हम एप्लीकेशन लिखुछे पिला माने मन रखिथबो व्हेन यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर यू हैव टू राइट थ्रू द क्लास टीचर एटी गोटे सब्जेक्ट रो परे हमें बसई दी परिबा थ्रू द क्लास टीचर राइट देन एई पर्सन हमर सरी गला परे हमर मेन पर्सन आसी जाउची बॉडी ऑफ द लेटर दूसरे हमें हमर डेस्क्रिप्शन बा हमर प्रॉब्लम को बा हमर डिमांड जोटा रही छी हमें सेटा प्रकाश करूची कोडी प्रकाश करिबा बॉडी ऑफ द लेटर एंड द बॉडी ऑफ द लेटर शुड बी मिनिमम 2 पैराग्राफ्स okay we can make it 3 paragraphs but minimum it is 2 paragraphs right body of the letter सरी गला 2 पैराग्राफ दीटा पैराग्राफ रे हमरो प्रथम पैराग्राफ रे हमें we want to convey what we want or what is our problem then second paragraph रे हमें कोन करबा लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन पैराग्राफ रे हमरो सॉल्यूशन हमको कोन दरकार अछि हमें कोन चाहू छी एटा लिखिबा ओके नेक्स्ट the last part it is called subscription एठी स्कूल क्षेत्र रे हमें साधारणतः yours obediently लिखि थाउ जेबडा हेडमास्टर को लिखु छे yours obediently अदर्स क्षेत्र रे हमें yours faithfully yours sincerely यूज करि थाउ yours faithfully yours sincerely ओके दीटा मते यूज करा जाए then put your signature is the format of application actually this is formal letter category रे हमें application सीखे let's try to understand with an example here so this is a question which is taken from this 2022 class 10th examination का परीक्षा रे आसीथिबा क्वेश्चन रो एटा होची गुटे एप्लीकेशन रो क्वेश्चन पिला माने एई वर्ष पढितला एटा देखो एटी क्वेश्चन को हमें चिन्हिबा प्रथमे क्वेश्चन रे हमें का को एड्रेस करा होची हमरो सब्जेक्ट कोन अछि एटा सब देखिबा इमेजिन यू आर बसंत मल्लिक studying in Prithviraj High School Balangir write an application in about 100 words to the headmaster requesting him to allow you to be absent from class for 2 days as you want to attend your mother who is seriously ill. This is the question and you have to write it in about 100 words 100 वर्ड भीतर हमें एप्लीकेशन दा लिखबा को चेष्टा करिबा so let us try to I have told you the first one कोन कहितले place and date okay तो प्रथम लिखिबा जिंस होची place and date और प्रश्न रे कोन थिला place ता थिला बलांगीर लिखा है देन डेट आसीगला आज डेट दिया ही नेक्स्ट तापर हमें जहां पाख को एप्लीकेशन लिखुचे मु कहितली प्रथमे हमरो डेजिग्नेशन जहां थिबो ऑफिसर को डेजिग्नेशन लिखा हबो आफ्टर दैट ऑफिस नेम हेगला पृथ्वीराज हाई स्कूल एंड एड्रेस हेगला राइट टू द हेडमास्टर इट द हेडमास्टर लिखा ही पृथ्वीराज हाई स्कूल देन बलांगीर next then salutation sir
Then the subject sentence. What is our subject? This is prayer to grant leave for 2 days. 2 दिन छुट्टी दरकार. Okay. Subject always try to write 6 to 8 words. बेसी लंबा करिवो नाही. Maximum 10 words भितर लिखिदबो. Do not try to write it very lengthy. अधिक संख्यक वर्ड यूज करिवो नाही एठी. Then through the class teacher here, this is only for application to the headmaster. Application headmaster को जितने लिखुचे आमे इटा लिखिवा. Other cases रे इटा लिखिवा କଥା नहीं. Next is the body of the letter, which is of 2 paragraphs. Here I have written here with due respect and reverence. I am Basanta Malik, class 10, writing magnanimously to request you that my mother is seriously ill with malaria and admitted in the district headquarters hospital Balangir, and I have to stay with and attend her for 2 days. That is on dated 23rd August 2022 and 24th August 2020. Okay. So this is all about your problem. ये फर्स्ट पैराग्राफ रे हमें प्रॉब्लम ता लिखि देले. सेकंड पैराग्राफ रे हमें कोन करबा, व्हाट वी वांट or what solution we want, that is we have to write in this second paragraph. Therefore I pray before you with my folded hands. देखो ये extra words use करा है, but you can make it simple. Therefore I pray before you to grant me leave, etc. You can write. This is I am not telling you that this is only the right format. While writing application, you can use different words. अन्य शब्द यूज करि परिबो, अन्य फॉर्मेट यूज करि परिबो. सॉरी फॉर्मेट को हम कहूची. अन्य अन्य में शब्द यूज करि डिफरेंट वे ताको डिस्क्राइब करि परिबा. Okay. So here, for which act of your kindness I will be highly obliged to you. This is the body of the letter, and the next one, the subscript. Okay. Your faithfully last लिखा हम मु कहितली सब गुडी को हमर लेफ्ट साइड को पड़ेगा. Right? Basanta Malik last. Okay. Okay. So let us try to discuss some tips and techniques when writing formal letter. हम जेतबेले formal letter यूज लिखुचे हम कोन कोन जिंस गुडा को करिवा उचित एवं कोन कोन अवॉइड करिवा उचित. Let's try to understand. So the first one, always no commas outside the main body of the letter. बॉडी को छाड़ी देला परे अन्य अनुसार हमें कमा यूज करिवा नहीं. ट्रेडिशनल मेथड रे कमा यूज करा होतला, बट हमरो न्यू मेथड अनुसार कमा केवल बॉडी रे रहिबो, अन्य अनुसार कमा रहिबो नहीं. ओनली इन केस ऑफ डेट. डेट क्षेत्र रे पिला माने मु कहितली ए भणिया जदी अछि ताहले कमा यूज करि पारो. हला हमरो डेट एवं ईयर का जदी पाखे लिखा है सेही क्षेत्र रे यू कैन यूज कमा, बट इन अदर केसेस डू नॉट यूज कमा एक्सेप्ट द बॉडी ऑफ द कंटेंट. बॉडी को छाड़ी देला परे, एकी अंश को छाड़ी देला परे अन्य अंश रे कमा हमें यूज करिवा नाही. एठी कमा यूज हबो कारण एठी डिस्क्राइब होसी कमा यूज हबो. एई अंश माने नो कमा, कमा यूज करिवा नाही. ओके, राइट. नेक्स्ट, यूज short sentences and simple words. छोटिया छोटिया सेंटेंस यूज करिवा, साधारण बा सिंपल वर्ड्स गुडी का यूज करिवा, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करिवा नहीं. एवं नेक्स्ट होची देन प्रॉपर पैराग्राफ्स. ओके, यूज प्रॉपर पैराग्राफ्स. एंड व्हाट वी डू नॉट यूज स्लैंग एंड जागन. स्लैंग जागन कोन पिला माने एठी स्लैंग मींस इनफॉर्मल वर्ड्स गुडा को स्लैंग बोली की कहा जाय. हम जेमति गोटे फ्रेंड को कथा वार्ता करिवा समय रे तू ता में कहूची कि नहीं,
This is informal words. Okay, informal words गुड़ा को हमें यूज करिबा नहीं, because we are writing application or formal letter to an officer or to headmaster. That is why always use do not use slang or informal words. And this is jargon means complicated words गुड़ा को यूज करा हवा कथा नहीं, जोटा टेक्निकल वर्ड गुड़ा करूची, that is called jargon. तो टेक्निकल वर्ड्स मध्ये हम यूज करिबा नहीं. आउ किछिटा जिंस देखिबा हमें, never write your real name. This is very important point. Remember, when in your examination question जो दिया हैतला देखो, you are बसंत मल्लिक लिखा हैतला. पिला माने कोन करंती, question थिबो बसंत मल्लिक लिखा हैछि, but they put their own name, निजर ना लिखि दियंती परीक्षा रे. स्कूल नेम रे निजर स्कूल रो ना लिखि दियंती. दियला always read the question carefully. Who is the applicant? What is the name of his or her school? What is the address? Everything is given in the question. Okay. So never write your real name or school name in the application. Read the question carefully. Read the question carefully to find out the applicant's name. Address टा खोजिबा में applicant's address कोटा, designation कौन ताका तो application टा लिखुचे, एवं address कौन अछि, वो authority को पास का application लिखा होची तार address कौन अछि. तो एगुडा को हमको टिके carefully देखिबा को पड़िबो while writing an application, right? देखो एठी ए कथा हम कहतली. Another question here, imagine you are Lambodar Jena studying in RCBM High School, Jaipur. This is Lambodar Jena is the applicant here. You are not the applicant. Don't put your name in the examination. Okay. The next one is office address. What is the office address? RCBM High School, Jaipur. Do not write your own school name. Nijar school na iti likhibo nahi. Then कहाँ पाखो को लिखिबार अछि, और क्वेश्चन रे सब किछि दिया ही थाए, तुमको से क्वेश्चन रु काढिबा को पड़िबो. एप्लीकेशन ना कहाँ पाखो को लिखिबार अछि, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर. देखो सब्जेक्ट इज ऑफ द एप्लीकेशन, सब्जेक्ट सेंटेंस हमको काढिबा एटू टू अलाउ ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच टू बी हेल्ड बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 and 9. Okay, let us try to write this application. देखिए पिला माने एप्लीकेशन रे. Okay. Another question here. Suppose you are Sandeep Swai residing. देखो एप्लीकेशन हेडमास्टर को देखिले. Other than school एठी आसी गेला. देखो स्कूल बाहर हमर आसी गेला. एठी का बाकू को लिखिबा the block development officer. To the block development officer of your block, request him to. This is the subject sentence here. To get village road repaired. This is the subject sentence. Here is the your address. It is your name, and this is the authority. You have to write the letter, or you are writing the letter. Video block name टा तुमको जानिबा दरकार पड़िबो. तो वीडियो पाखो को लिखुछ. सपोज सुंदरगढ़ रा वीडियो लिखिले हमें ना टू द विषय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुंदरगढ़ ब्लॉक रो ना लिखा एड्रेस टा. ओके. एठी हम गोटे ब्लैंक स्लाइड नै की लिखिया पई चेष्टा करिया पिला माने. So let's come to let's try to understand something about the formal letter. Okay. Sorry, informal letter. So I have told you what is informal letter. Informal letter कौन? Personal letter. Informal letter कहले पिला माने एठी मन रखिथबो. It is a personal letter, and it is a kind of letter that we write to our parents, close relatives,
and close friends. पर्सनल लेटर आमे निजर संपर्कीय पाखक लिखि था पितामाता हो कि फ्रेंड्स हूँ रिलेटिव्स हो फैमिली एंड फ्रेंड्स पाखक लिखा जाए. And what is the purpose of writing a friendly letter? Sorry, amaro personal letter. Friendly letters convey personal information about ourselves. When we are writing a personal letter, we convey our personal information. और व्यक्तिगत सूचना आम व्यक्तिगत जीवन में घटी घटना विषय में सूचना दे था. They show caring and concern for friends and relations, and also taking the time to handwrite a letter demonstrates our level of caring. हमारा स्नेह प्रेम और भाषा हमारा फ्रेंड्स हूँ सान भाई हूँ सान भौणी हूँ ताको हमें कन्वे करिथाउ. So this is the purpose of writing a personal letter. So this is also here you can see in personal letter. Previously it was written right hand side top. लिखिले मध्य किसी असुविधा नहीं लिखि पारिबो सेपटे no problem. That is name of the place and the date. Then when you are writing a personal letter, first comes salutation or greeting. जब आम लिखुचे सांग पाखक डियर फ्रेंड ना लिखुच सपोज डियर राज और डियर प्रियंका, डियर मॉम, डैड, डियर फादर, मदर, etc. etc. This is the salutation of greeting. After salutation, body of the letter, and in the body of the letter, the actual message we have to write. And it is divided into three parts: introduction, main content, and conclusion. Introduction ray, you can write about yourself, or you can write suppose how are you, and I got your letter, etc. etc. And in the main content, according to the question, main content रे आमे एगुड़ा को लिखा एक्चुअली क्वेश्चन कौन कहूँ से अनुसार आमको मेन कंटेंट रे लिखा को पड़ो. एंड आफ्टर दैट द कंक्लूडिंग सेंटेंस. एंड हियर द लास्ट वन, योर लविंगली नेम ऑफ द सेंटर. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. तो फर्स्ट फॉर्मल लेटर क्वेश्चन लिखि पकाओ. तो लिखिबो एटा. This is the question. I am giving you 2 minutes. Please write the question, and after writing the application, you show the application to your English teacher. Okay. This is the homework for you. Okay, another question from application, that is, this is one. Another homework. This is an application to the video. क्या मतलब लिखी पके था question टाको. So dear students, I think you might have understood how to write an application. Actually, letter writing जोटा मोर इनफॉर्मल लेटर आम आउ गोटे क्लास रे जदि पॉसिबल हुए करवा हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर. एंड फॉर्मल लेटर रो जोटा टेक्निक्स तुमको बतैली, जोटा मोर न्यू फॉर्मेट सब आसी से न्यू फॉर्मेट अनुसार लिखा चेष्टा करिवो. ट्रेडिशनल फॉर्मेट इज आल्सो ओके, बट आम सब नुआ जिनस को आपणा कथा जोटा इंट्रोड्यूस होती न्यू फॉर्मेट गुड़िक. So I hope you have enjoyed the class, and you might have understood well. Thank you very much.